Good morning to all of you. Welcome to Unacademy, the largest e-learning platform in India. And you are watching Unacademy OPSC. Dear students, my name is Samrat Keshari Mishra. In my last sessions, I have started discussion on agriculture. Agriculture is one of the important topic to be asked in the preliminary as well as the mains examination. So in today's time period, the relevance and significance of agriculture is increasing. Gradually, it is increasing day by day, and especially for those who are appearing OPSC examination, the relevance of the topic is quite more as compared to other topics, because I have already discussed in the very first class that 54% of the population of the total workforce, they are engaged in the activity of agriculture and allied agriculture. And now we are also increasing the relevance of the agriculture sector, because we have made agriculture an industry. We're trying to make it an industry first, and the second we're trying to make it make the agriculture export led. जहाँ भी हम प्रोडक्शन करिवा से सब एक्सपोर्ट करिवा, एक्सपोर्ट हिसाब रे एग्रीकल्चर को हम डेवलपमेंट करिवा को चाहछन्ती. So now I have started teaching in Unacademy Plus. Subscribe to Unacademy Plus by using this referral code EGOS, so that you will be getting 10% off upon your subscription amount. वर्तमान Unacademy Plus रे Unacademy रे मैराथन क्लास स्टार्ट हेची. समीक्षा बैच और सामर्थ्य बैच OPSC OS एग्जाम पाई, सिविल सर्विस एग्जाम पाई एंड ASO एग्जाम पाई. एथरे स्पेशल क्लास रहउची मैराथन क्लास आज टू स्टार्ट हेची. दुईटा बेले मैराथन क्लास अछि 2 PM at the noon 2 PM. I'll be taking economics and social development topics. So Unacademy रे ये स्पेशल क्लास रहइबो कंप्लीटली फ्री अछि. स्पेशल क्लास आपण स्पेशल क्लास जॉइन करि पारिबे. Then Unacademy Plus को सब्सक्राइब करिया पई यूज करंतु दिस रेफरल कोड EGOS. So let's start to this topic of discussion. Today I will discuss about the State Agriculture Policy 2013. जेहेतु हमें OPSC एग्जाम पाई प्रिपेयर होचंती, State Agricultural Policy 2013 it becomes very important with respect to the examination. So now next question होची कि ये पॉलिसी को यूज केमती करिवे, बार इंपैक्ट कोन बा इंपोर्टेंस कोन ये पॉलिसी रा. फर्स्ट डायरेक्टली तो क्वेश्चन आसी पारे बा न भी पारे कि व्हाट इज स्टेट एग्रीकल्चरल पॉलिसी एंड व्हाट आर इट्स सिग्निफिकेंस. रादर जो पॉइंट्स पाइबा हमें एटू एतोल क्वेश्चन आसीबो कि अकॉर्डिंग टू योर व्यू व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा टू एनहांस द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन ओडिशा. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एई एग्रीकल्चर पॉलिसी रे जहा जहा पॉइंट अछि, जहा जहा मेजर्स द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी टेकन, दोस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर एंड यू हैव टू राइट. ये जिंसो को हमको यूटिलाइज करिया पड़िबो. So State Agriculture Policy 2013 start kariba. The introduction is the government of Odisha declared the State Agriculture Policy in 1996. Then 2008 re Agriculture Policy को again it was revised by the government, because state agriculture भितरे हमें agriculture और अनेक जिनस include करिया को चाहते, जेमति allied agriculture कोंतु allied agriculture भितरे fisheries, poultries, poultry farming, all those things that will be inside the process of entire process of agriculture, because the agriculture process that should be integrated. Integrated means केवल agriculture करूछंतर meaning नहे कि हम गोटे crop production करिवा, rice production बा wheat production करिवा. Agriculture सहित हमें we need to integrate the allied agricultural activities, like जने poultry farming करि परिबो, ता सहित जने सेठी पिगेरीज बा गोटेरीज करि परिबो, गाई रखि परिबो, कुकुडा रखि परिबो. सो एथिरे फायदा कोन होय, हमको बेनिफिट कोन होय, एथिरे विभिन्न प्रकार बेनिफिट है. तो फर्स्ट बेनिफिट इज दैट द रिस्क विल बी मिनिमाइज्ड. लेट्स से बर्ड फ्लू हैला सेठी, तो जदि जने केवल ओनली चिकन बिजनेस करूची बा पोल्ट्री फार्मिंग करिची, देन सब कुकुडा तार मरि जिवे. बट जदि से इंटीग्रेटेड फार्मिंग करिची, अपार्ट फ्रॉम पोल्ट्री ता पाखरे फिशरीज अछि, से माछ चाष करूची, प्लस गोटेरीज अछि, छेली रखिची, गाई रखिची, सो दैट गोटेरु जदि किछि लॉस आसुची, ताको अनफॉर्चुनेट सिचुएशन रे लॉस आसुची, देन द लॉस कैन बी सब्सटेंशिएटेड बाय द प्रॉफिट फ्रॉम अदर सेक्टर. तो एठी बेनिफिट हमको एटा होची इंटीग्रेटेड फार्मिंग रा मोस्ट इंपोर्टेंट बेनिफिट. So for that purpose, the State Agriculture Policy 2013 it basically focused to make agriculture the agriculture an integrated process in which it will integrate all other aspects of agriculture as well. The next and the most important objective was
the type of agriculture that we are practicing in today's time period, that is the subsistence agriculture. Subsistence agriculture रे आमे primitive technologies use करंती, traditional technologies use करंती, बट एथिरे प्रॉफिट हमको कम आसे, बेनिफिट कम आसे, कहा को ना फार्मर को बेनिफिट एठी कम हो जाए, बट फाइनल ऑब्जेक्टिव तो हमर फार्मर, बिकॉज़ फार्मर वी नीड टू डबल द फार्मर इनकम, लास्ट क्लास रे हम डिस्कस करथिले. So first we need to double the farmers income, we need to prevent farmer suicide, distress in the agricultural sector, and the second objective of the agriculture is the finally consumer or the state. हमें food secure state create करिया को चाहउछंती, food insecurity को हटेवा को चाहउछंती. सो एटी दी जन को हमको टारगेट सब बळे एग्रीकल्चरल पॉलिसी जब फॉर्मुलेट करे गवर्नमेंट ध्यान रखिया को पड़े. द फर्स्ट इज द फार्मर हु इज प्रोड्यूसिंग फॉर द एंटायर कंट्री, एंड द सेकंड इज द कंज्यूमर. व्हाई फॉर द कंज्यूमर? बिकॉज द कंज्यूमर, द price of those food materials that should be accessible, affordable, as well as that should be available. Only then we can ensure food security to the entire nation. सो ये हमें देखिले कि दी जन को ऊपर फोकस करिया को पड़े सब एग्रीकल्चरल पॉलिसी रो. द फर्स्ट इज द फार्मर एंड द सेकंड वन इज द कंज्यूमर हु इज कंज्यूमिंग. वर्तमान फार्मर जो टाइप रो एग्रीकल्चरल पॉलिसी यूज करूथला, कोठी तो प्रैक्टिस करथले हम ओडिसा रे, जो टाइप रो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी यूज करथले इट वाज कंप्लीटली प्रिमिटिव. हमें ट्रेडिशनल फॉर्म रो टेक्नोलॉजी यूज करथले, जेम तुम कहि कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ द टेक्नोलॉजी इरिगेशन ने कोन तो स्प्रिंकल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन फैसिलिटीज वर देयर, high yield variety seeds are there, genetically modified crops are there. So modernized form, modernized version of agriculture को हमें practice करूनथले. And the basic objective of this policy, state agriculture policy, was to shift from the subsistence level of agriculture to the profitable and commercial agriculture, so that commercialization of the agriculture that will lead to increase in the farmers income, and more the farmers income, definitely there will be rise in the per capita income, there will be rise in the national income, as well as the farmer will not need to live in absolute poverty, so that the economic standard, economic health of the farmer can be gradually developed, right? The second most important objective of the policy was to promote sustainable agricultural development. To promote sustainable agricultural development. Sustainable meaning kona? If you understand this, only this keyword sustainable, then you can easily understand the what is the basic motive, objective of the government behind this agricultural policy. Sustainable means the way in which we have received the environment from our ancestors, we need to transfer the same environment to our next offsprings. जो वे रे, जो pure environment हमें receive करते from our ancestors, without any depletion, without any erosion, without any pollution, the same pure form of the atmosphere, the pure form of the environment we need to give to our next generation. Next generation पाई हमें same environment को pure करके रखो, ताकि impure करिवानी, but depletion न हो दरकार environment. सो सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कहले हम बुझंती कोनोसी प्रकार एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस पई जेमती एनवायरनमेंट ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट न पड़े. मानि नियंतो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल weedicides यूज कले फील्ड रे, so that there will be decrease in the soil health gradually. Soil health धीरे धीरे decrease करो, there will be less nutrient facilities, there will be net nutrients in the soil itself. The soil atmosphere that will be deteriorated gradually. When the microorganisms which are there, which are good for the health of the soil, which are good for the health of the crops, then those species will also be deteriorated by destroy ହେଇଯିବେ धीरे धीरे due to the excessive use of the chemicals that may lead to eutrophication. So आमे देखुछन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस रे विभिन्न प्रकार एक्टिविटी आमे इंक्लूड करछंती जहार नेगेटिव इंपैक्ट बा एडवर्स इंपैक्ट एनवायरनमेंट ऊपर रहिছে. सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस बा सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कहले आमे एया बुझंती कि एग्रीकल्चर रे जो जो प्रैक्टिस आमे करबा जहा जहा मीन्स रहबा हमर एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करिया पई, जेमती यार कोनसी प्रकार एडवर्स इंपैक्ट एनवायरनमेंट ऊपर न पड़े, राइट? द थर्ड, to encourage crop substitution, particularly in the upland and medium lands. Crop substitution, I can say what first understand what is crop substitution. Let's say गोटे field रे हमें continuously rice production ही करि चलछंती, so that soil is a different type of nutrients something, but rice plant it will require some specific nutrients. यदि continuously हम rice करि चले ताले specific nutrients soil लो कम हे चलियो. यदि rice परे हमें किछ leguminous plant न लगुचन से जगह रे nitrogen fixation नै सुद आसीबो, so nitrogen र availability कम हे जिवो, protein synthesis रे then plant र भी कम हे पारे. तो जो crop रखुचन सेठी crop rotation हवा दरकार, बा
मानि नियंतु किछि क्रॉप अछि गोटे रीजन ने तार हार्वेस्ट कला परे प्रोडक्शन भलो आसुनी अधिक क्वांटिटी रो प्रोडक्शन आसुनी गोटे पर्टिकुलर क्रॉप यूज कला परे देन से क्रॉप रो सब्स्टिट्यूट रखवा दरकार जो क्रॉप जो फील्ड रे भलो हुए जो सॉइल रे भलो हुए से क्रॉप को हार्वेस्ट कले फार्मर विल बी बेनिफिटेड एंड द gross production, the amount of production, quantity of production, that will also increase. So दीटा जिनस को आम ध्यान दे परिया प्रोडक्शन बढ़ाई परिया फार्मर भी इनकम किछ अधिक होई परियो. So एटी क्रॉप सब्स्टिट्यूशन रो आवश्यकता रही बेसिकली इन द अपलैंड एंड मीडियम लैंड्स बिकॉज दीज लैंड्स आर नॉट सुइटेबल बेसिकली दीज लैंड्स आर नॉट फर्टाइल न होइतिबा कारणरू एटी एग्रीकल्चर प्रत्येक टाइप रो क्रॉप रो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करा जाई पारे नाही. So next is the crop substitution is also required to prevent farmer suicide because the choice of the crop is very important. If the farmer is not aware which type of crop is suitable in which type of soil, ताले से तार मन इच्छा क्रॉप हार्वेस्टिंग करिबा क्रॉप प्रोडक्शन करिबा को ट्राई करिवो यदि गोटे रीजन ने गोटे क्लाइमेट ऑफ अ रीजन ज्योग्राफी ऑफ अ रीजन इफ दैट डजंट अलाउ a particular type of crop to be produced to be harvested in a particular region at that point of time the farmer is supposed to change the crop. It means the choice of the crop is very important to get maximum output or to get maximum productivity. For that purpose farmer एटी crop substitute करिवा दरकार बा right choice of the crop होबा एटी दरकार. The next is the focus on the horticulture crops including dryland horticulture. तो ये कहूँ कि केवल आम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करवानी इन द एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर शुड बी प्रैक्टिस्ड एज वेल हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिस कले हम पाको अधिक क्वांटिटी रो क्रॉप्स व्यतीत वेजिटेबल्स आसी परिबो. Next is to encourage the modern farming system approach. Modern farming system approach is required to shift from the primitive traditional way of agricultural practicing to the modern form in which I discussed we need to use different type of seeds, high yield variety seeds. We need to use to develop chemicals, insecticides, pesticides, weedicides, all those things. Organic farming, and then in the irrigation process we need to use sprinkle and drip irrigation facilities. So basically we need a shift from the traditional way of agriculture to the modern form of agriculture. Then the focus will be on the poultry, dairy farming, fisheries to augment the income of the farmers. See, there is a lean period for the farmer. जेतबेले से सीड सोइंग करूची then between the maturation period जो टाइम रे धान गछ लगा हे गला धान कटा हबो से टाइम पीरियड भीतर there is very less work for the farmer to be done in the field itself ता पाखर बहुत कम काम होय. So that time period is known as the lean period for the farmer and farmer को एठी हमें कोन दरकार फार्मर से टाइम रे आउ कुछ एक्स्ट्रा इनकम करि परिया पई ताको पोल्ट्री फार्मिंग करबा दरकार डेयरी फार्मिंग फिशरीज जदी करे देन फार्मर इनकम कैन बी इंक्रीज दैट कैन बी एनहांस्ड इन दिस टाइम पीरियड. देखो ये जो टाइम पीरियड में कहली इन द लीन टाइम पीरियड व्हाट द फार्मर्स डज इन केस ऑफ रूरल एरियाज देयर इज अ मोर रूरल टू urban migration. If you will be analyzing the rural to pattern of rural to urban migration, then in the throughout the year you will be finding more migration is during the lean period itself, because at that point of time the farmers they will not get any job in the rural zone and there is nothing to do in the field itself. फील्ड को प्रोटेक्ट करिवार किछि माने किछि काम न थाय सेठी आवश्यकता नाही. सो फार्मर एठी कोन करे ना नियरेस्ट सिटी को जाय किछि अनस्किल्ड काम करिया पई 4 मास 3 मास 2 मास पई काम करिवो सो दैट ही कैन अर्न समथिंग एंड कम बैक टू हिज फील्ड ड्यूरिंग द मैच्योरेशन पीरियड मैच्योरिटी पीरियड को जेमते रिटर्न आसी कि किछि हार्वेस्टिंग करि पारे. सो जदि एठी हम ताको फार्मर एक्स्ट्रा इनकम करि पारछंती थ्रू पोल्ट्री फार्मिंग थ्रू allied agriculture to dairy farming ताले डेफिनेटली फार्मर को माइग्रेशन रो शिकार होगा को पड़िबनी. The next is to encourage the organic farming. Organic farming it is related to sustainable practice of the agriculture, sustainable development. So instead of using the chemical technologies chemicals more in the field, rather we should shift towards the organic farming process. Next is the water use efficiency through the people's participation. See, water use efficiency पर ये policy कहीं के discuss करूँची. देखिए the quantity of water that we use for the irrigation purpose of the land that is quite more, but the final output is less in this regard. हमें बहुत अधिक water use करंती field रे, but तर final output कम आस्ते हम पाकू. But जदि exactly हमें जत्ती के water दरकार same quantity of water rightly in the root of the plant दबा, then definitely that will be helpful. So people's participation is required because we need to enhance the water use efficiency.
केमती हो पारिबो ना एटी कैनल फैसिलिटीज कोंतु जोटी कैनल नाही पॉन्ड फैसिलिटीज कोंतु तो या द्वारा करके हम इरिगेशन फैसिलिटीज को डेवलप करि परिबा बिकॉज़ द इरिगेशन देखिबे अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द इनपुट कॉस्ट बिलोंग्स टू द इरिगेशन फैसिलिटीज केवल इरिगेशन नहीं सब अधिक खर्च होता है फार्मर को सो इरिगेशन प्रॉब्लम जदि सॉल्व देन एग्रीकल्चर इनपुट स्टेज रे मैक्सिमम प्रॉब्लम फार्मर रो सॉल्व हो द नेक्स्ट to increase access to the credit for the small and the marginal farmers. Small and marginal farmer का credit विषय ये discuss करची तो important factor is why credit is required because credit is required for us to strengthen or to invest more in the field itself, more in the agricultural field itself. यदि हमें investment अधिक न करिवा investment हबो केमते credit facilities बढ़िले credit facilities केते बेले बढ़ी परियो जेतबेले फार्मर मान को स्मॉल एंड मार्जिनल स्केल फार्मर मान को डिफरेंट टाइप रो लोन हमें प्रोवाइड करि परिबा दैट मे बी थ्रू द कमर्शियल बैंक्स मे बी थ्रू द प्राइवेट बैंक्स और थ्रू एनी अदर बैंक्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी कोंतो या थ्रू जेतबेले क्रेडिट फैसिलिटीज फार्मर को मिल परिबो देन फार्मर को अनऑर्गेनाइज्ड सोर्स थ्रू वर्तमान लोन करिया को पड़िबोनी सो दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट द बर्डन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी डिक्रीज्ड फ्रॉम द शोल्डर ऑफ द फार्मर that will decrease e भी कम हो जिवो so automatically it will lead to increase in his production as well as the productivity and hence the income of the farmer. Next though improve the marketing facilities and access to the market information. These are both important, marketing facility and market information. Why it is required? See, marketing facility is required. The final product of the farmer, it will go to the that will rest in the market itself. The market ही ठीक नहीं, सीधा production कुछ तक बिकिबो कोठी. तो प्रोडक्शन पर मार्केट को और मार्केट फैसिलिटीज तक प्रोवाइड करिया दरकार जो से बिक्री करि पारियो तो जदी तको वर्तमान डेवलप करछन हम टेक्नोलॉजी आईटी यूज करके ई मंडी हिसाब रे बिक्री करि परछन ऑनलाइन भी हे परुची बिक्री करि परियो गोटे फार्मर चाहिले बा गोटे फार्मर पाखर जदी इंफॉर्मेशन मिलिबो मार्केट रो तब प्रोडक्ट रो वैल्यू केते अछि मार्केट प्राइस केते अछि अदरवाइज द फार्मर विल बी एक्सप्लॉइटेड जदी तको प्रकृत प्राइस तार न जणा परे से पर केजी 30 रुपीस रे बिकुथो बट मार्केट प्राइस विल बी 60 रुपीस देन देयर विल बी मिडलमैन एंड देयर विल बी broker those who will purchase from the farmer itself for 20 rupees 30 rupees and they will sell it again in the market with 60 rupees so there will be a loss of 30 rupees for the farmer per kg. So farmer loss को avoid करिया पाई risk को mitigate करिया पाई market facilities provide करिया दरकार so the farmer will have access to the market first and the second is the in all the information related to the market that should be given to the farmer and all these informations are being used or being given to the farmer by using the information and communication technology in today's time period. Different type of mobile software apps nowadays they are coming जो हमारे farmer को complete information provide करछंती. The next is the integrated watershed development program, natural resource management. Natural resource हम पकड़े जहाँ ची जिम्ते land, irrigation facilities, environment ये सब को manage करिया दरकार plus watershed development करिया दरकार and farm and non farm income of the farmer ताको भी increase करिया दरकार. तो हमें जितने के objective पढ़िले summary पढ़िले sorry जो objective पढ़िले state agriculture policy रे जति यार summary देखिबा तले को sector को ये importance देथिला entirely को सेक्टर को ये इंपोर्टेंस दिसला जब देखिबा देन इनपुट मैनेजमेंट को इंपोर्टेंस देथिला इनपुट मैनेजमेंट रे एग्रीकल्चर करिया पई जो फैसिलिटीज हमको दरकार जेमति कि इरिगेशन फैसिलिटीज रिक्वायर्ड देन हमको सीड्स दरकार प्रॉपर सीड्स दरकार यदि मंजी ठीक न रहै ताल त गछ प्लांट क्रॉपिंग हेल्दी हेबोनी तो क्रॉप हेल्दी नले प्रोडक्शन भी हेल्दी हेबोनी सो नेक्स्ट इज इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स हर्बिसाइड्स वीडिसाइड्स ये सब दरकार ये सब होते इनपुट requirement. Input management is very important because input this is the input which will lead to the proper output. Harvesting अधिक केते बडा हो जेतबे input हम पाकर अधिक रहबो input न रहले harvesting हे परिबनी so proper input is required. The next is the skill development. Skill development it is required to enhance the skill of the farmers. Basically the farmers are not aware about how to use the technologies. General concept गोटे कहूची देखबे किछि भी agricultural practice करंतु they will use NPK fertilizer नाइट्रोजन फास्फोरस फर्टिलाइजर को पोटेशियम फर्टिलाइजर को दे विल यूज किछि भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस बट दैट इज द प्रॉब्लम हमर ऑब्जेक्टिव नुहे कि एनपीके को प्रत्येक जगह यूज करिबा रादर वी विल यूज दोज फर्टिलाइजर्स इन व्हिच the nutrient will be given to the soil. If the soil is deficient in the nutrient ताले सही फर्टिलाइजर को हम यूज करिया दरकार यदि हम soil रे नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम प्रॉपर अमाउंट प्रॉपर क्वांटिटी जति के रेशियो रहबा कथा अछि then there is no need to use NPKs
there is no need to माने न यूरिया रिक्वायरमेंट फास्ट हमें देखिबा से सॉइल रो कि केति किता रिक्वायरमेंट अछि से रिक्वायरमेंट अनुसार हमें फर्टिलाइजर्स फार्मर एटी यूज करिवार आवश्यकता रही बट द थिंग इज दैट फार्मर एटी जानि पारेनी कि ता सॉइल रे को न्यूट्रिएंट अधिक अछि एंड को न्यूट्रिएंट कम अछि. For that purpose, soil health card scheme was launched by the government of India, in which the health card of a soil is given to the farmer. So the complete ingredients of the soil will be there. कि what is the pH value of the soil, what is the nutrients ratio of the soil. ये सब जिनस दबा द्वारा farmer को easy हुए the soil को prepare करिया पई बा the farm को prepare करिया पई for the upcoming harvesting or production year. So for that purpose skill development is required. केवल एतिक रे स्किल नुहे rather skill development agriculture itself is a skill. समस्त एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस देखिए धान लगेबा कथा समस्त धान लगे परिबेन. सो जानिबा दरकार कि दीटा प्लांट भितर स्पेस केते रहबा दरकार, दीटा लाइन भितर स्पेसिंग केते हवा दरकार. ई सब होची स्किल. केवल तो एग्रीकल्चर नु हम पूर्व देखिछन इंटीग्रेटेड फार्मिंग करिवार अछि एटी. सो एग्रीकल्चर रे जेमते जहा करी कि फार्मर प्रिमिटिव वे रे चलाई दउतला बट द थिंग इज दैट इतर पोल्ट्री फार्मिंग करिवे, फिशरीज करिवे वा डेयरी फार्मिंग करिवे. सो एनी unskilled work of the farmer that will directly affect the life of those livestock. तो जो ठीक भाव रे से पोल्ट्री गुडा को मैनेज न करि पारे देन किछ दिन पर से चिकन जाति से सब मर जे बा जदि माछ चाष करूची ठीक भाव रे पीएच मैनेज न करि पारिला से जो पॉइंट रे माछ पडुची से तार पीएच मैनेजमेंट ठीक भाव रे न होई पारला तल से माछ जाति से माछ सब मर जे. जो एथिरे स्किल डेवलपमेंट दरकार फार्मर को ये तार स्किल को जेमति यूटिलाइज करि परिबो सो दैट मैक्सिमम प्रोडक्शन हे पारे एंड मैक्सिमम इनकम से जनरेट करि पारे. The third is the skill development is required by to use the softwares or to use the information and communication technology. Basically गोटे smartphone use at least गोटे farmer को आसबा दरकार so that the person can install a particular app. जो आप फ्रेम को इन्फॉर्मेशन फार्मर को मिली परिबो रिलेटेड टू द मेटीरियोलॉजिकल डाटा और रिलेटेड टू द मार्केट इन्फॉर्मेशन. ये सब जिंस जो मिली परिबो फार्मर को सेठी यूज करबा दरकार आईटी को बस किछ सॉफ्टवेयर को बा किछ ऐप सो दैट फार्मर नॉलेज आसीबो फार्मर पाखरे इन्फॉर्मेशन मिली परिबो ताको. सो स्किल डेवलपमेंट बेसिकली ई फील्ड रे फार्मर को दरकार जे स्टेट एग्रीकल्चर पॉलिसी 2013 रो ऑब्जेक्टिव थिला. द नेक्स्ट इज द इंटीग्रेटेड फार्मिंग. इंटीग्रेटेड फार्मिंग वी डिस्कस्ड इन द इंटीग्रेटेड फार्मिंग टू मिनिमाइज द रिस्क, टू मिटिगेट द रिस्क we need to integrate different organs of the farming, that is the livestock farming kohuntu, in which poultry farming is there, goateries is there, fisheries is there. So केवल agriculture नुहे ता सहित allied agriculture practice को horticulture को floriculture को हमें integrate करिवा so that farmer risk भी कम होबो, farmer income भी increase हे परिबो. तो rest of the time period farmer the time को भी manage करि परिबो so that at least the person will not be unemployed for that टाइम पीरियड. से अनएम्प्लॉयड हे के रहबोनी बा ताको एम्प्लॉयमेंट न मिलियो बोली कहि परिबोनी. रादर इंटीग्रेटेड फार्मिंग कले इनकम तक अधिक कहि परिबो. इंटीग्रेटेड फार्मिंग करि कि आजकल का टाइम पीरियड रे दे आर जनरेटिंग मच मोर इनकम as compared to the jobs जमन जेमति जॉब पूर्वर करथले कि they are migrating from Odisha to some other countries. वर्तमान जदि केवल ओडिसा रे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऊपर मु कहिबी जो माने ओडिसा रे यूथ अछंती they're migrating from Odisha to other states, especially to Surat, Chennai, even jaga jauchନ୍ତି काम करिया पई. And the salary structure if will be analyzing, then it will be maximum 10 within the bracket of 10 to 20,000. 10 to 20,000 pay they're leaving their own state, home state, they're doing any job under someone else, किछि कंपनी रे काम करछन्ती many times in the unhygienic condition, ठीक कंडीशन रे काम करनांती, जोटी से काम करथिबे लेबर लॉ सहित कंप्लायंस नथिबो, से मानक लीगल प्रोटेक्शन नाही, राइट्स रो प्रोटेक्शन नाही, इंडिपेंडेंस नाही, स्टिल बहुत कम टंगा रोजगार करिया को से माने बाहर को जाउछन. जदी ह्यूमन रिसोर्स ओडिसा रा में डेवलप करि परिबा, स्पेशली यूथ माने जो माने बाहर को जाउछन, जदी गवर्नमेंट ए जगह रे यूथ मानकर कोनस प्रकार डेवलप करिया पई हेल्प करि पार, जेमति कि किछि एंटरप्रेन्योरशिप इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर को प्रमोट करा जाय पारे, बस मानकर स्किल डेवलप करा जाय पारे. वी कैन मेक देम मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर. So because why people are not engaging in the agricultural activity is because we see agriculture as a symbol of backwardness. जे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करछि से प्रिमिटिव से नॉन ट्रेडिशनल से मॉडर्न में. सो ये जो परसेप्शन अच्छा मान का मन रे टुवर्ड्स एग्रीकल्चर, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग. That is a wrong perception because the entire world has nowadays putting importance to the agriculture sector. WTO, World Trade Organization, FAO, International Monetary Fund, World Bank, समस्ते बर्तमान डिक्लेयर कर सकते कि एग्रीकल्चर इज नॉट अ सिंबल ऑफ बैकवर्डनेस.
पूर्वर आम भावुले कि दोज हु आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री सेक्टर और इंडस्ट्रियलिस्ट एमाने एग्रीकल्चर सेक्टर टू अधिक डेवलप्ड किंतु एक्चुअली नुहे एग्रीकल्चर सेक्टर भी बहुत प्रोस्पेक्ट अच्छी बट द थिंग इज दैट हमको एग्रीकल्चर सेक्टर जानवा पड़ो एंड वी नीड टू इंप्रूव दैट सेक्टर लोक मान पर्यंत परसेप्शन इंटरेस्ट क्रिएट न होइछि से पर्यंत डेवलपमेंट हो पार इवन इफ बर्तमान देखो इंडस्ट्रियलिस्ट माने बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट अच्छा जो मैंने एग्रीकल्चर को धीरे धीरे इंटरफेयर कले से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर गोटे बड़ रिजन नौ बड़ जगह नौ एकर एकर जगह नौ फार्मिंग प्रोसेस किसी कमर्शियल फार्मिंग करके प्रोडक्शन को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट कर बाहर यदि एग्रीकल्चर से प्रॉफिट न था ताले केबे भी इंडस्ट्रियलिस्ट माने इंडस्ट्री छाड़ी वर्तमान एग्रीकल्चर आड़ को आसंतानी सो स्किल डेवलपमेंट रे एति कहबे कि हमर जो माने यूथ अछंती यूथ मानकर डेवलपमेंट यूथ माने बाहर को न जा पाई यूथ मानकर गोटे होलिस्टिक डेवलपमेंट हेवा पाई तांकर स्किल डेवलपमेंट करा जा उचित प्लस सेमान को एग्रीकल्चर सेक्टर रे केमति सेमान अधिक इनकम करि परिबे सेमान इंटरेस्ट बढ़ा जाय परिबो ता प्रति ध्यान देवा दरकार The next is the agro processing. This is a very important sector in today's time period. Processing कहले processing रे कोन बुझंती processing रे माने जेतों हम डिस्कस करछन समस्त मन को माइट भी गोटे क्वेश्चन आसी पारे कि processing रे हम कोन देखंती कि छोटे बड़ जिंस करबा आलू काटी के से चिप्स करबा yes that belongs to agro processing चिप्स करबा जो लेज कुरकुरे देखुछंती से agro processing भीतर आसुची बट छोटो छोटो जिंस जेमति कि धानरु चावल धानरु गोडी बाछिबा चावलरु गोडी बाछिबा ये सब भी agro processing भीतर आसुची वर्तमान देखुतबे डाली पैकेट चावल पैकेट सब पैकेट रे मिलुची गोटे गोटे केजी and those who are working in the SHGs self help group रे जो वुमेन माने काम करछन्ते समान एको प्रोडक्शन करछन्ते ये भी एग्रो प्रोसेसिंग भीतर आसुची यदि नॉर्मल खोला डाली किनिबे केजी 90 रुपीस पडुची देन जोटा प्रोसेस हेतिबो जोथुर धान बा किछि गोडी बाछि देथिबे से ताको टिके परिष्कार कर देथिबे गोटे पैकेट करके ताको बिक्री करथिबे मार्केट रे देखियो 92 रुपीस 2 टंका एक्स्ट्रा अछि पर केजी तो जो प्रोसेसिंग कॉस्ट वैल्यू एडेड कॉस्ट दैट विल गो टू द SHG तो इट कैन एक्ट एज अ गोटे एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी हिसाब रे लगे परिबा बा समानकर किछि इनकम ही पारे या व्यतीत एग्रो प्रोसेसिंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट स्टोरेज करके फूड को बिकॉज़ मैक्सिमम फूड्स दे आर क्रॉप्स दे आर पेरिशेबल इन नेचर किछ दिन पर नष्ट हो जांती तो ए कारण रो हम एग्रो प्रोसेसिंग करके ताको यूटिलाइज करि परिबा सो दैट स्टोरेज वैल्यू बढ़ि जिवो अधिक दिन पय हम ताको स्टोर करि परिबा यह important fact related to agro processing. Agro processing by most important requirement is the capital and the second requirement is the skill development. Again government it is skill development ପାଇଁ ଯେତେ initiative करा जिवा दरकार initiative नबा उचित प्लस ट्रेनिंग प्रोवाइड करबा दरकार केमती एग्रो प्रोसेसिंग करा जाय परिबो केमती स्टोरेज करा जाय परिबो बा जने मिल्क ऊपर जदी काम करूची डेयरी फार्मिंग करूची देन मिल्क प्रोडक्शन केमती इंक्रीज हे परिबो मिल्क को केमती हम स्टोर करि परिबा मिल्क को से अधिक दिन पर्यंत केमती रखि कि तार मिल्क डेरिवेटिव मिल्क रो माने न तो कॉर्ड मिल्क इज पेरिशेबल गोटे दिन लास्टिंग जदी देखियो मिल्क ते गोटे 1 डे लास्ट करियो बट जदी ताको कॉर्ड कर दोछन देन 7-8 दिन रहि परिबो दही यदि सेथरु आउ किछि दही को प्रोसेसिंग करके जदी आउ किछि स्वीट कॉर्ड हे परछ देन आउ टिके तार लंगजिविटी आउ टिके बढ़ि जिवो 15 दिन 20 दिन भलिया रहि परिबो बा जदी ताको यूज करके हम घियो कर दोछंती ताले घियो आहुरी अधिक दिन रहि परिबो तो ये डिपेंड करछि को स्टेज देके हम ताको प्रोसेस करबा दरकार प्रोसेसिंग कले मुख्य इंपोर्टेंट एठी जिंस होछि कि हमें गोटे पर्टिकुलर प्रोडक्ट रो लंगजिविटी को बढ़ी परिबा लाइफ लंगजिविटी को अधिक दिन हेले ऑटोमेटिकली हमें ताको बिकिवारे किछि प्रॉब्लम होबा यदि गोटे जिंस नष्ट हो जिवो गोटे दिन भीतर ताले फार्मर ताको बहुत कम टंका बिकिवा ପାଇଁ बाध्य हो किंतु ताको से प्रोसेसिंग करके रखि पारे अधिक दिन पर्यंत ताहाले ये डेफिनेटली हेल्पफुल हबो एंड फार्मर रे इनकम को 100% इंक्रीज करिवो then next is the agricultural credit facility is required to invest more in the field more in the agriculture sector the credit न बढ़ौचंती हमें इन्वेस्टमेंट अधिक न होची देन देयर विल बी प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट हेले तो इनपुट कॉस्ट फार्मर बढ़ेबो इनपुट कॉस्ट बढ़ेबो प्रोसेसिंग कॉस्ट बढ़ेबो बा आउटपुट ऑटोमेटिकली सेम वेयर इंक्रीज हो सो एग्रीकल्चरल क्रेडिट पूर्वरु फार्मर को आनथिला हम डिस्कस करथिले कि फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज्ड सोर्सेस लाइक मनी लेंडर्स टू आनथिला एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक चार्ज करथिला फार्मर देई परनथिला इंडेप्टनेस वाज देयर फाइनेंशियल बर्डन वाज देयर मेंटल टेंशन वाज देयर एंड मेनी टाइम्स दैट लीड्स टू आइदर माइग्रेशन और दैट वुड लीड टू farmer suicide. So agricultural credit is a must and agricultural credit nowadays it is included in the PSL priority sector lending of the banks. Bank manakar PSL bhitar asuchi so there are some norms related to the PSL. Agriculture bank manako agriculture field ko particular amount 18% of the total PSL so manako dawa padibo as the credit. The next is the marketing. We discussed marketing ऊपर हम elaborately discuss कले बर्तमान कि marketing एथि पई हमको दरकार the final resting place of the produced goods is the market. यदि market रे ठीक भाव रे farmer पहुंची न परछि तार production को तार जहा जे produce करछि ताले farmer पाखरे किछ लाभ होबनी farmer को किछ benefit आसीबनी
So market condition structure जब ठीक रहुची then definitely that will be helpful for the farmer. And जो हमारा target अच्छी कि to double the farmer income, to remove absolute poverty, poverty eradication, poverty elimination, development of the agricultural sector, inclination of the more people towards the agriculture sector, all those things we can ensure. मार्केट जो स्ट्रांग हो क्रेडिट फैसिलिटीज जो मिल जाव स्किल डेवलपमेंट जो हो इनपुट मैनेजमेंट एंड जो एग्रो प्रोसेसिंग फार्मर शिखि एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग करने को स्टार्ट करिवो देन डेफिनेटली फार्मर रो इनकम बढ़ी परिवो एंड वंस देखिबे जो गोटे फार्मर देखला कि आ गोटे फार्मर किछि प्रैक्टिस करी तार इनकम बढ़ुछि सो नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर दैट विल इंक्रीज डे बाय डे एंड वी कैन गिव इंपोर्टेंस टू द एग्रीकल्चर सेक्टर. So this is all about the state agriculture policy 2013. This was formulated by the government of Odisha. This is the basic summary of the entire discussion. So आपको यूज केमती करबे हम कहली कि जो पॉइंट जहा जहा पॉइंट डिस्कशन करली जेतबे क्वेश्चन आसीओ कि व्हाट मेजर शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू डेवलप एग्रीकल्चर सेक्टर ताले ए पॉइंट डिस्कस करबे. So in the next class I will discuss from here only कृषक असिस्टेंस फॉर द लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन कालिया योजना या पर समस्त सुनथिबे या पर नेक्स्ट क्लास रे डिस्कस करबी. इट इज YouTube क्लास 3 pm टुडे इटसेल्फ अछि 3 टा अछि हम YouTube पुनी कंटिन्यू करबा. एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट आज 2 टा बेले 2 pm Unacademy so स्पेशल क्लास अछि मोर इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट रिलेटेड. यू कैन जॉइन तो you can download the app. इटी description box रे मो कंप्लीट description दिया जाय छी how to follow me in Unacademy in on how to subscribe to the Unacademy OPSC channel. ये सब description box रे अछि जो माने प्लस रे नांती से माने प्लस को सब्सक्राइब करि परिबे by using this referral code EGOS EASYOAS कोन से स्पेस न दे की different alphabet भितरे यूज करंदु so that you will be getting 10% discount upon your subscription amount. So join today's marathon class. केवल मोर इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट रो मराथन नुहे आज स्पेशल क्लास जे कंप्लीटली फ्री अछि अपन मान को पई अपकमिंग OCS ओडिशा सिविल सर्विस एग्जाम पई ये क्लास अछि जोथि हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटी प्रत्येक सब्जेक्ट रो मराथन क्लास आज अछि Unacademy ऐप रे अपन चेक करि परिबे. So thank you everyone, have a good day, see you in the next session.